Good morning, everyone. Welcome to PG Ka Pathshala, and this is your host PG. So, hope you people are having a very relaxing Saturday morning. Yesterday was holiday in most of the schools, offices, as well as stock market. So, today morning, if you are at home, you must be relaxing, or otherwise, many of you are in vacation mode. I'm pretty sure. So, just thought of sharing with you a very small video on how to draw candlestick. Now, candlestick is the basic thing about stock market or any security analysis in financial market analysis. People who do trading, they learn this candlestick first. Okay, so I am pretty sure that in my YouTube channel we have got quite a few number of followers who don't know too much about stock market. So for them, this is the first video. This should be the first video. I made it after 16 videos. I thought of making this, but for people who are new to my channel, and those who have been following me, so please take some effort to see this channel for 10 minutes, and then you will be able to draw a candlestick, and you will understand, what is this red candle, green candle, white candle, which you can see in various websites. So let me start with a very simple example. So say one day one stock opened at 800 rupees, made a high. So this is what we have drawn over here. So opened at 800 rupees, made a high of 1000 rupees, low of 700 rupees, and closed at 900 rupees. So what does this open means? Open means when the market opens, stock price opens at 800 rupees. When market closes, stock price closes at 900 rupees. In the entire trading day. So example, Indian stock market, 9:15 to 3:30. So within this time, the lowest price was 700 rupees. And the highest price was 1000 rupees. Okay, so this is exactly what I meant when I told this thing. Okay. So now I have pictorially represented this entire thing over here. So I have pictorially represented this entire thing. You can see. Sorry. So here, if you see this thing, this picture, this is x-axis, y-axis, 700. So 700 was my lowest price. So 700, 800. So this level is my 800. Okay, so this is 800. Okay, this is 900. This is 1000. This is, I'm sorry, and this point is 700. Okay. Because 1900, so 1000 greater than 900, greater than 800, greater than 700, right? So now what does it mean? That it opens at 800. So the stock market, when the market opened, the stock price opened at 800, and when the market closes, so stock price closes at 900. So the closing price greater than opening price. Correct? 800 greater than 700. Sorry, 900 greater than 800. ठीक है, तो ये जो आप ये रेक्टेंगल पोर्शन देख रहे हो, दिस रेक्टेंगल पोर्शन, ओके, सो दिस थिंग, बेसिकली दिस रेक्टेंगल पोर्शन जो है, ये रेक्टेंगल पोर्शन जो है वो ओपनिंग प्राइस और जो क्लोजिंग प्राइस है उसके बीच वाला जो प्राइस रेंज है उसको ऐसे रेक्टेंगुलर शेपेड में ये करता है. ठीक है, और लोएस्ट और हाईएस्ट को, सो ओपनिंग यहाँ पे क्या, और ये जो हाईएस्ट और लोएस्ट पॉइंट को ऊपर नीचे अगर ऐसा रहता है तो यहाँ से ये 800 से जो 700 है ये आपका रेक्टेंगल नहीं होगा, ये एक ही वन लाइन होगा, ऐसे ऐसा सिंगल लाइन होगा. ठीक है, और सिमिलरली इधर ये भी एक सिंगल लाइन होगा, ये रेक्टेंगल नहीं होगा. इसको बोलते हैं वीक. सो वन कैंडल स्टिक comprises of a watch and a wheel.
तो ये जो मेरा फिगर है, ये फिगर में, फिगर राइट से, बॉडी इज फ्रॉम 700 टू, sorry, body is from 800 to 900. Upper width is from 900 to 1000. Lower width is from 800 to 700. तो wick जो है वो दो wick होता है. So one candlestick comprises of lower wick, body, upper wick. ठीक है. So now you will should be able to draw the other things. So this thing which I have written here. तो ये अगर दूसरा होता, ये अगर ऐसे होता, open that 900. ठीक है. हाँ, और एक चीज, जब भी ये ओपन, जब भी ये ओपन ये होता है, ओपन क्लोज, क्लोज से छोटा होता है. when the closing price is greater than opening price, then you will see the, in many website it is white, it is painted in white. ठीक है. बहुत जगह में ये पेंटेड ऐसे व्हाइट में ही रहता है, और बहुत जगह में इसको ग्रीन कैंडल बोलते हैं. तो ये जो है ये पूरा ग्रीन कैंडल रहेगा. तो इसका जो अंदर ये होगा ना आपका, ये पूरा, ये पूरा ऐसा ग्रीन कैंडल हो जाएगा, ये ग्रीन कैंडल हो जाएगा. ठीक है. और अगर उल्टा होता है, सोचो कि ये हो गया व्हेन स्टॉक ओपन एट 900, मेरा हाई ऑफ 1000, लो ऑफ 700, क्लोज्ड एट 800. मेरा ओपनिंग प्राइस और क्लोजिंग प्राइस अगर अलग हो जाता है, क्लोजिंग प्राइस अगर मेरा ओपनिंग प्राइस से कम हो जाता है, क्लोजिंग प्राइस 800 और ओपनिंग प्राइस 900, तो यही जो कलर है, ये कलर रेड हो जाता है. ये कलर रेड हो जाता है. समझे. तो आप वेबसाइट में देखे होंगे, बहुत सारे investing.com में, ये लाल और ग्रीन, लाल और रेड एंड ग्रीन. सो व्हाट डज द रेड एंड ग्रीन इंडिकेट? दिस इज bearish candle, रेड. ठीक है. एंड दिस इज बुलिश कैंडल, ग्रीन और व्हाइट कलर. ठीक है. बहुत जगह में व्हाइट भी होता है, बहुत जगह में इसको व्हाइट भी ऐसे कर देते हैं, व्हाइट कैंडल स्टिक भी बहुत जगह में करता है. चार्टिंग में आप देखोगे व्हाइट है, इन्वेस्टिंग में देखोगे ग्रीन है. ओके. तो अभी मैं ग्रीन ही रखता हूँ इसको. तो जब, तो इसका केस में हम लोगों ने क्या देखा था? तो इसका केस में तो अपर लोअर वीक रिमेन्स द सेम. ठीक है. अपर वीक लोअर वीक रिमेन्स द सेम, बट योर कलर ऑफ द कैंडल चेंजेस बिकॉज योर क्लोजिंग एंड ओपनिंग आर डिफरेंट. ठीक है. तो so now if you, if we want to draw some other kind of candlesticks, say for example ये 900 के जगह में 850 होता है, और ये 800 के जगह में 820 होता है, so then body becomes smaller. ठीक है. so say for example ये हो गया 870, और ये हो गया 850. ठीक है. सो इन दैट केस क्या होगा, ये जो बॉडी है इसका,
So this, just a minute. So this width of the depth of the body size कम हो जाएगा, ये कम हो जाएगा आपका 870 this time, जिससे ये थोड़ा छोटा हो जाएगा। ठीक है, ये छोटा हो जाएगा आपका, और ये जो दो साइड दिस लाइन थोड़ा बड़ा हो जाएगा, ये बड़ा हो जाएगा, ये भी थोड़ा बड़ा हो जाएगा 870 to 1000, और मेरा ये जो 830 है, ठीक है। तो इधर मैं एक टेक्स्ट बॉक्स डाल के, टेक्स्ट बॉक्स डाल के इधर 830, so this is my 830, this is my 870, this is 1000, and this is 700। ठीक है, तो मेरा 700 से 830 130 पॉइंट, 870 टू 1000 वो भी 130 पॉइंट, तो मेरा बॉडी छोटा हो गया। ठीक है, तो अभी ये 830 में क्या हुआ था, 830 में ओपन हुआ था या 870 में क्लोज हुआ था, उसके चलते तो ये ओपनिंग 830, क्लोजिंग 870, ग्रीन, क्लोजिंग 830, ओपनिंग 870, और क्लियर। तो ये बहुत सिंपल एक एक्सप्लेनेशन था। होप यू लाइक इट। आई वोंट टेक टू मच ऑफ योर टाइम ऑन द वीकेंड। Thanks for watching, and if any comment or anything you further want to know, want to get some clarification, please message me in the comment section, or you can reach me in my Twitter and Telegram as well. Okay? Thanks for watching. Happy weekend.